Hey folks, Saksham this side from AceIPM. Now that IIM Rohtak's IPM interview are approaching, it becomes important not only for people who have been shortlisted by IIM Rohtak, but also people who are preparing for IPM 24 and 25 to understand the selection criteria of IIM Rohtak's IPM. I had a similar class with my students for PI preparation at Rohtak today. If in case you are also shortlisted for IIM Rohtak's interview, you can also enroll in our PI preparation course for just $399, get mock interviews, workshop sessions, PI handbook, previous year compilation and everything included. You can check that out. But whilst having that session, we came across this, conclusion in terms of, I shared this with my students in terms of how, despite the weightages and everything being same as last year's, the selection procedure this year is going to be very different. So wanted to share it with all of you as well. So without any further ado, let's begin. So if I look at IIM Rohtak's selection criteria, it has been the same for the last 2 years, with 45% given to your aptitude test, which is IPM at Rohtak, 40% to past academics, which is your class 10th as well as class 12th marks, and 15% a very small portion given to your interview, which is why a lot of people tend to neglect the interview section. However, I would say this year, despite the weightages being the same, it is going to be extremely different and interview is going to play a big role over here. Here is why. So if you look at the cutoffs of IIM Rohtak in the last 3 years, it has changed significantly. First year it was 2021 was 265, 2022 it was 306, 2023 this year it is 409, which is crazy. And all of this is out of 480. If I look at the 445, mark component for the aptitude test over here, if you score 265, what you are going to get out of 45 is 25. In the year 2022, it is 306. So the composite score that you get is 29 out of 45. 23, if you just clear the cutoff 409, that gets you 38 out of 45. What it essentially means is that in the year 2021, there would be somebody who's selected for IIM Rohtak's interview, who's scoring 265 and getting just 25 out of 45. And somebody theoretically getting 480 on 480 and that person will get 45. The difference over here is 20 marks, which is very hard, to chase if in case, through the means of your past academics as well as your interview process. So that becomes a hurdle in terms of your, 2021 paper. Same is the case with 2021. The deviation is of about 16 marks. So somebody getting just the cutoff versus somebody getting full marks. The difference is of 16 marks. Again, a significant jump. 2023, on the other hand, since the cutoff in itself has been so high, 409, that in itself fetches you 38 out of 45. So over here, the deviation is of just 7 marks. And realistically speaking, more or less the people who have been shortlisted from general category, the average marks should be in the range of 430. And if you are getting 430, you get 40 on 45. If you're getting 409, just clearing the cutoff, you are getting 38 on 45. So over here, the entrance, despite having the highest weightage of 45%, does not really play that big of a role this year at least, given that everybody has scored so high that the cutoffs have, risen, and which is why the difference in scores isn't as much. So that is there in terms of your entrance. And if you look at the, past academic weightage as well, the same story repeats over there as well. We are not sure in terms of whether they follow any band system in terms of weighing your application for your 10th and 12th marks, or they have a linear scale. But people suggest that it is a linear scale, and if we take that into account, what we need to understand is that 60% minimum तो है ही, तो 60% सबका आना ही आना है. So in that case, अगर 40 marks का वो weightage है, component है, तो उसमें से 60% mark तो सबको मिल रहे हैं. That is 24 marks. So again, here deviation is of 16 marks. But of course, हर एक बच्चे के 60 marks तो नहीं आ रहे हैं, right? Ideally, if you look at the average marks scored by people who are a part of our interview preparation course and our students, that is somewhere around in the range of 85%. Let's say you are somebody who's gotten an 85% and there's somebody who's gotten a 95%, right? अब इसके बीच में 10% का गैप एक्चुअली बहुत बड़ा है. बट अगर आप इसे अपने वेटेज के टर्म्स में देखें तो द डिफरेंस इज ऑफ ओनली 4 मार्क्स. Somebody who's getting a 95% will fetch 38 out of 40. Somebody who's getting an 85 will fetch what? He'll fetch 34 out of 40, right? तो वो difference है, definitely है, but इतना ज़्यादा नहीं है compared to the weightage that it has been given, which is of 40 marks. However, the things change when we talk about personal interview, because personal interview, although 15 marks का ही component है, but ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अगर interview tank करके आते हो, खराब करके आते हो, you might as well get 4-5 marks out of 15, and बहुत अच्छा interview देके आओगे, you might as well get 14 or a perfect 15 out of 15. So over here, even though weightage जो है बहुत कम है, 15% है, but यहाँ deviation या फिर variance बहुत ज़्यादा है. In that case, यहाँ पर
कोई बच्चा शायद अगर उसका 10th में 12th में 95% है, उसके एग्जाम में 430 मार्क्स हैं, बट यहाँ पर उसका इंटरव्यू बेकार गया विच इज 5-1-15 इंटरव्यू वर्सेस समबडी जिसके शायद बेरली कट ऑफ क्लियर हुई है, 409 आए हैं, 85% मार्क्स हैं, इंटरव्यू अच्छा दिया है, वहां पर उसे 12-13 मार्क्स मिल रहे हैं, देन दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड एंड द पर्सन हु हैज टॉप्ड द एग्जाम्स इन बोर्ड्स एज वेल एज हिज एप्टीट्यूड टेस्ट विल नॉट बी. So that is a strange revelation which is there at least in the case of this year given the cutoffs have been so high, but it might as well follow suit in the subsequent years as well. बट इवन दो इससे आपको शायद डर लगने लगे कि इंटरव्यू तो मेक और ब्रेक सेक्शन है, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन तो हो गया है, बट अब इंटरव्यू से मैं फाइनल सिलेक्शन की तरफ कैसे जाऊं, ये तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? दिक्कत होगी, यस, बट देन देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट. द फ्लिप साइड और द पॉजिटिव चेंज ओवर हियर इज दैट यूजुअली IIM रोहतक 900 से 1000 बच्चों को कॉल करता है फॉर देयर इंटरव्यूज. अब 900 से 1000 में अगर हम लास्ट ईयर की बात करें दैट वाज 911. इस ईयर this year it has gone down to just 731 people who have been called for interviews versus the number of seats which is 180. 180 के बाद भी ऐसा होएगा, हर एक बच्चा जिसको रोहतक एडमिशन देगा वो वहां पर एडमिशन नहीं लेगा. सम पीपल विल चूज टू विदड्रॉ देयर एडमिशन और जस्ट नॉट टेक एडमिशन एट ऑल. सो दोज विल बी पीपल जिनका शायद IIM इंदौर हो रहा है, कुछ IIM रांची के लिए भी शायद छोड़ दें, कुछ बच्चे DU में नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस जाएंगे, SRCC हो गया, स्टीफेंस हो गया, शहीद सुखदेव हो गया, एंड कुछ बच्चे हो सकते हैं हु कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे जस्ट गिव IPM एज अ बैकअप एंड उन्हें मिल रहा है कोई IIT, NIT, कोई अच्छा इंजीनियरिंग ऑप्शन, सो दे माइट एज वेल गो फॉर दैट. Which is why थोड़ा सा वेटलिस्ट मूवमेंट होना भी लाजमी है. So in case of 180 seats, you can expect the waitlist movement will be another 60-70 people. So that becomes roughly 240 or 240-250 odd people who are going to get the final selection versus 730, which brings the selection ratio down to just 1 in every 3 people is going to get a seat in IIM Rohtak, which is much better than previous years. And of course you might comment कि भैया जनरल कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन है या इस कैटेगरी में कम है, जो भी है. I am only taking an overall aggregate, but what you need to understand is आप कोई भी केस ले लो, पिछले सालों से तो एटलीस्ट सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है आपका, सिलेक्शन परसेंटेज है, it is going to be much better this year. So that is a good news for all of you. All of that put together, आपको पता है कि अब इंटरव्यू ऐसी चीज है जो कि मैटर करने वाली है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रियली प्रिपेयर फॉर वेरी हार्ड. एंड इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू एक्सपेक्ट, या फिर आपको किन किन चीजों के बारे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स इज योर कोर्स एज वेल एज द इंस्टीट्यूट. यू आर गेटिंग टू IPM, आपको पता होना चाहिए IPM का करिकुलम कैसा है, व्हाट इज दिस कोर्स अबाउट, इसके एंड गोल क्या है, इसके पिलर्स क्या हैं, इज देयर एनी USP अबाउट IIM Rohtak's IPM, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम लेट्स से IIM Indore करिकुलम वाइज या किसी और चीज में. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. साथ में इंस्टीट्यूट एज अ होल कब स्टार्ट हुआ था, द डायरेक्टर एंड थिंग्स अराउंड दैट, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यू शुड ऑल्सो नो योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स. बाय योर सेल्फ यू शुड बी अवेयर ऑफ योर हॉबीज एंड एवरीथिंग दैट इज ऑफ कोर्स देयर. बट साथ में व्हेन आई टॉक अबाउट सराउंडिंग्स, दैट ब्रिंग्स द पॉइंट डाउन टू पर्सनलाइज्ड जीके. पर्सनलाइज्ड जीके में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बारे में, आपके शहर के बारे में, आपकी स्टेट के बारे में, आपके पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में. इट कुड बी ऑन एनीथिंग व्हिच बेसिस ऑफ द कन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग, देयर कुड बी अ काउंटर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर हमारे एक बच्चे थे समद, यू माइट हैव सीन हिज वीडियो, and in his case the way it worked was because his dad was in the leather industry, he was put up a question about the morality of using leather or things around that. Similarly, अगर मैं अपने रूममेट की बात करूं back in IIM Rohtak, he was from Lucknow, so the question that he was asked was, Lucknow is famous for its chicken curry, tell me what chicken curry actually means. So questions like that. आपके सिटी के जो भी MLA, सिटी पे तो नहीं जाएंगे बट सिटी की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं. उसके बाद आपके स्टेट के MLA, स्टेट के अंदर CM, गवर्नर, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं. पॉलिटी रिलेटेड कोई भी अगर कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है तो एज वेल एज द प्रीवियस CMs, ex-CMs एज वेल. So that those are the kind of questions you can expect in terms of your personalized GK and things around your about your surroundings. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके basic HR questions आते हैं. You should definitely be thorough with your introduction. You should be thorough with your career goals, short term as well as long term. You should be thorough as to why are you shifting from science or humanities to IPM. You should be thorough as to even though you're a commerce student, why an IPM makes more sense than a regular plain vanilla BBA or a BCom and then going for an MBA. So questions like that is something that you should be expecting and should be preparing for well in advance. उसके बाद अगर हम बात करते हैं past academics की, आपके 11th और 12th के जो topics रहते हैं, that is also something that you need to revise. Primarily 12th, कुछ cases में 11th base बनता है तो for example economics, तो वहाँ थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा. At least ऊपर से surface level पे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. You don't have to go too deep in terms of your preparation.
उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीके करंट अफेयर्स की, सो स्टैटिक जीके लाइक कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. Samad again was asked in his Indore interview capitals of a lot of countries. So it is a random thing, but at least you should know the major countries, their capitals, all the states of India and their capitals, number of states, number of union territories, also the number of rivers that are flowing through your states, things around that, right? So static GK में आपका वो सब कवर हो जाता है. करंट अफेयर्स में मेजरली लास्ट 3 महीना, बट आइडियली आपको अगर 2023 का सारा करंट अफेयर पता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. करंट अफेयर्स में एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको करके जाना है. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर I would say important topics could be the new parliament building, the crisis in Manipur, or let's say ChatGPT is again a very important topic that could be asked, you could be asked questions on. उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बजट आया है, तो दैट बिकम्स अ हॉट टॉपिक एवरी ईयर. सो क्वेश्चंस अराउंड दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, तो आपको वो भी करना पड़ेगा. साथ ही में one highlight about IIM Rohtak's interview, which does not happen in the case of IIM Ranchi or IIM Indore, is an extempore round, wherein you are given a topic, you have to think about it for 30 to 60 seconds of time, and then you have to speak on it for about a minute or two. So that is going to be there in an IIM Rohtak's interview for sure. So you need to be practicing for that as well. अब मैंने आपको 5-6 चीजें बता दी हैं. जरूरी नहीं है आपके इंटरव्यू में सारी चीजें हो सकता है किसी बच्चे से पास्ट एकेडमिक्स ना पूछे, हो सकता है किसी का इंटरव्यू सिर्फ करंट अफेयर्स पे हो जाए, हो सकता है इन 5-6 चीजों में से आपसे सिर्फ 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, या सारी भी पूछ सकते हैं. बट एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम, बिकॉज वी डोंट नो क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे, हमें सब कुछ प्रिपेयर करके चलना पड़ता है. एंड इन दैट केस, इफ यू वांट to help you in terms of your IIM Rohtak's interview preparation, if you have been shortlisted, you can of course look at our course, and there we make sure कि बच्चों के mock interviews अच्छे से हो रहे हैं, they are getting proper feedback. We ensure कि आपके पास access है about all the major current affair topics that you need to focus on. We guide you in terms of क्या क्या चीज़ें आपको past academics में touch करनी है, क्या क्या चीज़ें आपके इंटरव्यू में आपके इंट्रोडक्शन में और आपके जो HR क्वेश्चन होंगे उनमें रहेंगे. एंड जनरली एवरी क्वेश्चन दैट यू माइट हैव अबाउट दिस इंटरव्यू प्रोसेस इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ बाय योर सीनियर्स हु आर करंटली सिटिंग इन IIM Rohtak. So if you're interested, you can check that as well. But that was it for today's video. I hope you found it helpful. If you did, please leave a like, comment down your views, subscribe to the channel for more such updates, and I will see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye-bye.